Now listen, dear children. We'll be doing maths together. Now there are 8 chapters in maths. Index numbers will be starting today. That the weightage of this chapter is 8 marks with options. अभी
how is the paper pattern? Choose the correct. 40 marks is maths. 40 marks is maths 1. 40 marks is maths. I'll be taking maths 2. 40 marks maths 2 में first question is 6 marks का है. Choose the correct alternative. मतलब 4 options will be given and 1 is the correct answer. Phillips में options होते हैं MCQs जैसे वैसे 6 marks. Then filling the blanks 3 marks. True or false 3 marks. मतलब 12 marks objectives are in maths 1 as well as maths 2. फिर next आता है 3 marks question. Attempt any 2 from the following 3 questions. वो 3 marks के 2 questions होते हैं 6 marks. 3 questions दिए जाते हैं आपको 2 attempt करने हैं. They are 3 marks. Then 4 marks question. Then again 3 marks 4 marks. Then comes last में activities. Sums ही होते हैं उसको question भी होता है solution भी होता है. Solution में बीच में boxes होते हैं. Yeah, like that. Filling the blanks जैसे. ये स्टेप में 25/30 into 100 करना है तो 100 का बॉक्स होगा वैसे. सम पूरा क्वेश्चन भी होता है सॉल्यूशन भी होता है बीच में बॉक्सेस होते हैं. दैट इज ऑफ 4 मार्क्स. यू अंडरस्टूड एवरीवन? मींस 12 plus 4 16 मार्क्स. 16 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स मैथ्स 1 में, 16 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स मैथ्स 2. मतलब टोटल 80 मार्क्स के पेपर में 32 मार्क्स इज ऑब्जेक्टिव्स. यू अंडरस्टूड? Now you will get the textbook reliable. उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है क्लास वर्क प्लस होमवर्क बुक भी मिलेगी. क्लास वर्क प्लस होमवर्क इतने आप रिलायबल की टेक्स्ट बुक कर लो मतलब उसके बाहर का एक भी सम नहीं है. ऑल पास्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स एज ऑन लेटेस्ट मार्च 22 का वो भी डाल दिया. लास्ट अभी जो एग्जाम हुई है जस्ट मार्च 22 में वो भी डाल दिया है with answers. Have you understood? So past board questions are also there और सबके आंसर्स डाले हुए हैं. So once you do this much मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आया. लेकिन complete maths 1 and complete this classwork and homework book has to be done. Classwork we will be doing only complete. Homework is your duty which is to be done. एक बार कर लिया उसके बाद कुछ भी बचेगा नहीं पेपर में जो नहीं. Have you understood? Yes. Now we will start with index. What is index numbers? Index numbers. Now certain commodity we were using last year. अभी वो एक commodity अभी भी यूज कर रहे हैं. Last year उसका price suppose 10 rupees था. अभी price 15 rupees हो गया. तो price has increased. Yeah, last year the price was 10 rupees. Now the price is 8 rupees. So price has decreased. So this rise or fall in price, percentage rise or percentage fall in price is known as index. Now we'll read here. वैसे ही quantity का हमने ए बातें बंद कर पाए. First lecture है चुप बैठ. You come here. Come ahead. हाँ come ahead. Anywhere come ahead. Anywhere you want to sit. Yes. Now see here. Quantity index. Last year इतनी quantity consume करते थे अभी ये साल इतनी quantity consume. What is the percentage increase or decrease in quantity consumption is index numbers. Value of a commodity last year. Value is price into quantity. Value of the commodity last year इतना था अभी इतना है. What percent of value of commodity has increased or decreased? That is nothing but index. Percentage increase or decrease in price or quantity or value, we say it as index. अभी देखो, the index number indicates the rise or fall in particular value in comparison to its value in the base year. What is base year? Now let me explain you base year. Base year मतलब क्या? See, this is April 2020. We are comparing with April 2021. Then April 2021 is the base year. And April 2022 is the current. फिर हम April 2022 को March 2022 से कंपेयर करें तो March 2022 is a base year, base period, and April 2022 is the current. हम April 2022 का कंपैरिजन ये वीक और लास्ट वीक कर रहे हैं तो लास्ट वीक is the base period, this is the current period. Yes, we are comparing
today with yesterday. So yesterday is the current period, base period. Today is the current period. Now means base period can be एक साल भी हो सकता है, month भी हो सकता है, quarter भी हो सकता है, 6 months भी हो सकता है, 1 week भी हो सकता है, 1 month, 1 day, it can be whatever. But in right now in this chapter, base period is taken as year. 2021 और 2022 में कंपेयर करिए तो 2021 is the base period. Have you understood? I am comparing 2012 with 2022. Then 2012 is my base period. 2022 is my current period. समझ में आया everyone? समझ में आ गया what is base period and current period? The index which that indicates the rise or fall in particular value in comparison to its value in the base year. The value in current year is expressed as a percentage of base year. The value in base year is considered as 100%. And on that basis, the corresponding percentage of value in current year is calculated. For example, if price of an article is given below, the value in 1991 is taken as 100%. And the value of other years is taken and as expressed as a percent. अभी देखो 1991 का प्राइस 1991 का प्राइस इज 10 रुपीज. ठीक है. नाउ दिस इज 100%. 1992 में 12 रुपीज हो गए. मीन्स पहले था 10 रुपीज. फर्स्ट इट वॉज 10 रुपीज. नाउ इट हैज बिकम 12 रुपीज. So how much percent is increase or decrease? That is 120%. The price has increased by 120% in 1992 as compared to 1991. 1993 में 15 था, so we write here 15 upon 10 into 100. That is, we cancel this zero. मतलब ये 150%. Price has become 150%. समझ में आया? So 1991 के comparison में 1993 का price is 150%. Have you understood? 94. 94 is 17. So we write here 17 upon 10 into 100. Into 100. So we cancel this. So price in 1994 is 170% as compared to 1990. Have you understood this? Price index समझ में आया? चलो अभी we will write. Give the heading index numbers. The 2 years will be given. The one which is only your year is to be taken as a base. Huh? What? 19 में. हाँ 90 for every. Yes. Please write changes in
The general level changes in the general level of prices are measured using a statistical tool known as index numbers. Known as index numbers. Index numbers provide one of the most popular statistical tools used in economics. Used in economics. Used in economics. Index numbers cannot be measured directly but are constructed with the help of some mathematical form. Some mathematical formula. Index numbers are usually expressed as percentages. Are usually expressed as percentages. For example, Nifty. मालूम है शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ग्रीन दिस ट्रायंगल इज देयर, नीचे जाते हैं तो रेड ट्रायंगल इज देयर. दैट इज नथिंग बट इंडेक्स. हैव यू अंडरस्टूड? फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बीएसई सेंसेक्स. Yeah. Now we go ahead with notations. Notations नहीं, terminology सबसे पहले. Sorry. Terminology. Terminology. Base period. Base period. The base period of an index number is the period against which comparisons are made. Comparisons are made.
जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज द बेस पीरियड, राइट डियर चिल्ड्रन? यस, द बेस पीरियड इज इंडिकेटेड by subscript 0. Subscript 0. What is subscript? I'll explain. First, we complete writing. Base period is indicated by subscript 0. पता है हम ऐसे लिखते हैं a square. Yes. That is known as prefix. ये जो रहता है उसको suffix बोलते हैं. That is subscript. Actually इसको suffix बोलते हैं. This is suffix. Suffix is, you understood? समझ में आया? ये a square लिखते हैं, a2 लिखते हैं ना, यहाँ पे है. This is subscript. Understood? This is subscript. Current period. Current period. Come here बेटा. Come anywhere else. आगे किधर भी बैठ जाओ. ये बेंच है ना यहाँ पे जगह. हाँ बैठ जाओ. Current period. The present period is called the current period of an index number. Is called the current period of an index number. The current period is indicated by subscript 1. Is indicated by subscript 1. Current period is indicated by subscript 1. Everyone has understood this much? Yes. We go ahead. Notations. Notations. P0. ये स्मॉल p है, सिंपल फॉन्ट यू टेक इट. स्मॉल p. P0. Yes, suffix. P0 means price of commodity in base year. Price of commodity in the base year. Price of commodity in the base. P1. Price of commodity in current year. In the current year. Price of commodity in the current. Correct? Q0. Quantity. जो बेस ईयर का प्राइस होता है उसको P0 बोलते हैं. करंट ईयर के प्राइस को P1 बोलते हैं. सेम वे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड और कंज्यूम्ड of a commodity in the base year. In the base year. Base. Q1.
quantity produced, purchased or consumed of a commodity in the current year. In the current year. W. Simple लिखना, cursive मत लिखना, please. Write all simple font. Don't write cursive. W. Weights assigned. Weights assigned to a commodity according to its relative importance in the group. In the group. According to its relative importance in the group. इसका मतलब क्या होता है? Let me explain. Weights assigned to a commodity according to its relative importance in the group. अभी ये आगे का लिखना मत. देखो. We are doing food, then clothing, rent, for example, electricity, education, miscellaneous. Food pay 50% खर्चा करते हैं. Clothing 10%, rent 5%, electricity 15%. बराबर है? 18% यहाँ पे एजुकेशन पे, राइट? 20, 30 हो गया, 18, 19 और 2% मिस. नाउ ये नथिंग बट वेट्स असाइन. इसका 50% वेटेज है. इसका क्लोथिंग का वेटेज इज 10%, रेंट का वेटेज इज 5%, इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज इज 15%, एजुकेशन का 18% एंड मिसलेनियस का 2%. दिस इज वेट्स असाइन्ड टू द कमोडिटी according to its relative importance in the group. Have you understood? These are weights. Clear, everyone? Now next, I. Simple index number. Capital I. Cursive में मत लिखना, dear children. Simple index number. Simple index number. It is also called the price relative. It is also called the price relative. It is given by I is P1 upon P0 into 100. I is P1 upon P0 into 100. देखो बच्चों, बेस ईयर में प्राइस इतना था, करंट ईयर में प्राइस इतना होगा. How much percentage increase or decrease in price? That is index. Understood? Base year में price was so and so. Current year में price is so and so. How much percentage increase or decrease in price? That is nothing but index. Clear? Yeah. Now coming to the next. P01, capital P01. cursive में मत लिखना, simple handwriting में. P01. Price index for
for the current year, price index for the current year with respect to the base year. With respect to the base year. P01 प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. कैसे देखो, ये 1 है ना, वो करंट ईयर है, 0 बेस ईयर. तो प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर P12 होगा. तो प्राइस इंडेक्स ऑफ सेकेंड ईयर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ईयर. प्राइस 10 होगा. तो प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट. ऐसा समझ में आया. प्राइस 23 होगा. तो प्राइस इंडेक्स ऑफ थर्ड ईयर विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ईयर. क्लियर एवरीवन? समझ में आया ये P01? बॉयज ईयर? यस. P0. Similarly, Q0. Q0. Quantity index for the current year. Quantity index for the current year with respect to the base year. With respect to the base. Quantity index for the current year with respect to the base. P01. ये जिसने भी किया होगा वो ब्लॉक हो जाएगा. someone entered my ब्लॉक हो गया. जूम पे उसको अलाउड ही नहीं होगा कभी भी, कोई भी जगह पे अलाउड नहीं कर रहे. डिम्पल्ड एरिया करके नहीं डालेंगे. They won't put dimpled area. They will put the different reliable classes. ऐसे नहीं करते. V01 value index for the current year. ये सब तब चलता था when we were new notices. तब चलता था. Now we are very much frequented. सब हो गया है तो ये सब नहीं चलता यहाँ. वैल्यू इंडेक्स फॉर द करंट ईयर. वो सब पे चैट बॉक्स में नॉनसेंस डालते हैं, वो सब अभी चलता नहीं. एवरीथिंग गेट्स ब्लॉक्ड. वैल्यू इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर. V01 value index of the current year with respect to one base. What is value? देखो हम 10 pencils खरीदने गए. We will ask what is the price of one pencil. We say 3 rupees. So 10 into 3, 30 rupees is the value of 10 pencils. Yes. So price into quantity is the value. Value of the commodity base year makes nothing.
वैल्यू ऑफ द कमोडिटी करंट ईयर में इतना हो गया, हाउ मच परसेंट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू, दैट इज वैल्यू। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? यस, वी प्रोसीड। Now next is construction of index numbers. Construction of index numbers. What do we mean by construction of index numbers? Construction of index numbers का मतलब क्या होता है? अभी इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट, परसेंटेज कैलकुलेट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मींस वेटेज, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, ये सब कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं। नाउ दिस डिफरेंट मेथड्स आर नोन एज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। There are that it is very wide concept. You don't have all formulas, you have less than 50% of the formulas. 50 भी नहीं, 25% of the formulas ही है। जो बेसिक एकदम है वैसे formulas यहाँ पे है। Now in this construction of index numbers, as we write here, index numbers are constructed by following two methods. First, aggregate method. Second, relative method. Aggregate method, second, relative method. Now, what is aggregate method? Aggregate means sum total of everything. Relative मतलब individual. चीजें कंपेयर करते हैं तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। Now I'll explain it more clear. देखो, हम ग्रोसरी पे खर्चा करते हैं, एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, फ्यूल पे, then we do this, what do you say, fruits and vegetables पे, milk पे, rent पे, miscellaneous पे, whatever, all this expenditure. तो sum total of all the household expenditure last year का and sum total of all the expenditure this year ka we compare, then that is known as aggregate. But when we compare milk, grocery ka last year ka expenditure with grocery ka this year ka expenditure, then it is known as relative method. लास्ट ईयर हमने फ्यूल पे कितना खर्चा किया था और ये साल हमने फ्यूल पे कितना खर्चा किया, if we compare, then that is known as relative. But total expenditure of last year of everything is compared with total expenditure in this current period, then it is known as aggregate. समझा everyone aggregate and relative? Yes. Now first is aggregate. अभी color pens हो तो use करना for writing the formulas. Yes. One full side of a page, fresh page will be required. So अभी जो aggregate, हाँ रुक जा, एग्रीगेट मेथड के हम जो फॉर्मूलाज लिख रहे हैं उसके लिए न्यू पेज लेना, बिकॉज एक पेज पे पूरी समरी आ जाए फॉर्मूला। बोलो एग्रीगेट, दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स लास्ट ईयर का पूरा सब, ग्रोसरी, मिल्क, फ्यूल, जितना भी खर्चा हुआ टोटल लास्ट ईयर का खर्चा, वी कंपेयर ऑफ ऑल कमोडिटीज विद दिस ईयर, देन दैट इज नोन एज एग्रीगेट। और इंडिविजुअल हमने किया, लास्ट ईयर ग्रोसरी पे कितना खर्चा किया, अभी ये साल कितना, लास्ट ईयर मिल्क पे कितना किया, ये साल मिल्क पे कितना किया, लास्ट ईयर फ्यूल पे कितना किया और ये साल फ्यूल, देन दैट इज रिलेटेड। नाउ फर्स्ट एग्रीगेट मेथड। मार्जिन में हेडिंग दो, एग्रीगेट मेथड, मार्जिन में ऊपर हेडिंग दो बड़े कैपिटल लेटर से, एग्रीगेट मेथड। इन दिस we have two parts.
1/4 of a page for simple aggregate method, 3/4 of a page for weighted aggregate. ये पेज है आपका, इतना पेज फॉर सिंपल एग्रीगेट मेथड, इतना पेज फॉर वेटेड एग्रीगेट. समझ में आया? मोर देन हाफ ऑफ पेज फॉर वेटेड एग्रीगेट. So we write here simple aggregate method, simple aggregate method, weighted aggregate method. In this, first, price index. First, price index. P01 summation P1 upon summation P0 multiply by 100. Price of the commodity, total price of all commodities in base year. ये total price of all commodities in current year. देखो सारी prices A, B, C, D, E, F, G, fuel पे, फिर miscellaneous पे, grocery पे, milk पे, जितना भी हमने टोटल खर्चा किया है बेस ईयर में, ये टोटल खर्चा करंट ईयर में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज है, दैट इज प्राइस इंडेक्स. हैव यू अंडरस्टूड? द नेक्स्ट, क्वांटिटी इंडेक्स. क्वांटिटी इंडेक्स. Done, everyone? Yes. Capital Q01 summation Q1 upon summation Q0 multiply by 100. Total quantity consumed in base. अभी total quantity consumed in current year. कितना परसेंट increase या decrease in quantity consumption is quantity index. Have you understood? Yes. Total quantity consumed in base year. This is total quantity consumed in current year. Summation means sum of. Sum total. Sum means total. Clear? SUM. Sum means total. Yes. Next, value index. Third, value index. B01. Value कैसे होता है? Price into quantity is value. So we write here summation P1 Q1, value of a commodity in current year upon value of a commodity in base year. Price into quantity is value. Yes. Multiply by 100 because index numbers are usually expressed in percentage. इसलिए multiply by 100 subject. Have you understood? This is known as the value. Have you understood this? Price, quantity and value. अभी यहाँ पे weighted aggregate. Weighted aggregate. This is law. 6 formulas are there. It will take time. Now weighted aggregate method सबसे पहले P01 और index quantity index वाले formula नहीं है, right? Summation P1 of WW multiply by 100. See how it is. हर question, हर formulas of weighted aggregate method में P1 upon P0 है. फिर next हमें WW because ये weighted aggregate method है, weights है, तो WW multiply by 100. W are weights. Have you understood? That will be given in the question.
Now इसमें first last phase price index number, last phase price index number, last phase price index number. P01 last phase, L for last phase is, देखो यहाँ पे summation P1 upon P0 fixed, as I told. He takes into consideration base year quantity. So Q0 multiply by 100. ये जो W है वो Q0 हो गया है. So here W is equals to Q0. Have you understood? Yes. P1 upon P0 fixed. He takes into consideration base year quantity. तो वो हो गया Q0 multiply by 100. Have you understood? Next, purchase price index number. Purchase price index number. P01 purchase. Summation P1 upon P0. Q0 है यहाँ पे आएगा Q1 multiply by 100. That is purchase price index number. Purchase price index number. इधर W क्या हो गया? Q1. W की जगह Q1 डाला हमने. So we write here W is equals to Q1. Clear? Yes. Last phase ने क्या लिया? Base year quantity. Purchase ने क्या लिया? Current year quantity. P1 upon P0 fixed. Q0 multiply by 100. Purchase P1 upon P0. Q1 multiply by 100. Correct? Now the third is the favorite of all students. Why I tell you? See, Darvish-Bawley's price index number. Darvish-Bawley's price index number. He is known as Shortman. Understood? Yes, he's known as this. He's real like this. Correct? Yes. Those who have understood are smiling. Now see here. See, P01 Darvish-Bawley. He is known as that Darvish-Bawley's price index number because उसने अपना फॉर्मूला नहीं लास्ट फेज और पास्ट फेज का यूज किया. P01 लास्ट फेज प्लस P01 पास्ट फेज डिवाइड बाय 2. Hence he is known as that. Understood? ये हम कभी भी इसको भूलते नहीं है. फेवरेट है ना. अभी देखो, last phase is in percentage, past phase is in percentage, तो percentage का percentage नहीं निकालना है, hence multiply by 100 नहीं. Have you understood? So Darvish-Bawley's arithmetic mean of last phase and past phase. हाँ, लेकिन अगर उन्होंने last phase और past phase नहीं पूछा, directly Darvish-Bawley पूछा, तो कैसे करेंगे? Then we write like this: P01 D dash B is summation P1 upon P0 Q0 plus
summation P1 upon P0 past trace Q1 Q1 divided by 2 multiply by 100 क्योंकि ये परसेंटेज नहीं है. समझ में आया फॉर्मूला? हाँ या नहीं? ये लास्ट पेज का, ये पास्ट पेज का, ये अरिथमेटिक मीन, ये परसेंटेज नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? So we write here Darvish Wally is arithmetic mean of last phase and past trace. Darvish Wally's arithmetic mean of last phase and past trace. Right? Done, everyone? So last phase is what? P1 upon P0. He takes into consideration what? Base year quantity. Q0, Q0. Multiply by 100. Past phase is what? P1 upon P0. Q1, Q1. Multiply by 100. He takes current year quantity into consideration. Then Darvish Bali of a favorite is what? Arithmetic mean of last phase and past phase. P01 last phase plus P01 past phase divided by 2. Have you understood? दूसरा वाला फॉर्मूला अपने आप याद रहेगा, पहला वाला ही याद है. दूसरा वाला क्यों दिया है? फिलिप्स, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, उसमें सब डालते हैं तो विशु ऐसा नहीं है कि पहली बार देखा होगा. That's why I've written. Have you understood, everyone? Yes. Now coming next. ये थर्ड था ना, अभी फोर्थ. Fourth. Fisher's ideal index number. Fisher's ideal index number. Fisher's को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ बस ऐसे ही बोलते हैं. उसको आइडियल क्यों बोलते हैं पता है? There are 4 tests in index number which you don't have in syllabus. That is in SYJC. वो 4 में से maximum tests are being satisfied by Fisher. Hence, he is known as the ideal index. Clear? Yes. Right? Fisher's ideal index number. P01 Fisher. Now last bit to base year quantity. Past phase took current year quantity. Correct. Then Darvish Wally took arithmetic mean of last phase and past phase. अभी Fisher सोच रहा है मेरे लिए क्या बचा. So now and he became the ideal index number. So he is geometric mean of last phase and past phase. See? थोड़े थोड़े चेंजेस में नाम आ जाता है, वो भी आइडियल. P01 last phase पहले last phase. P01 last phase into P01 past phase. These are already percentages. So वापस उसको multiply by 100 नहीं करना. Have you understood? Yes. Or directly Fisher's is to be found in P01 Fisher's square root
चलो लास्ट पेज कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ऐसे ही लिखेंगे समेशन P1 अपॉन P, लास्ट पेज Q0 multiply past trace P1 upon P0 Q1 Q1, yes, multiplied by 100 will be out of the square root sign. Have you understood? Fisher's geometric mean of last phase and past phase. Geometric mean of last phase and past phase. Fisher's geometric means it on the side, maintain distance, keep the bag on that side. फिर मेरा कुछ जरा रिपीट करो तो आप ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट फेज एंड फास्ट फेज रिटर्न यस नेक्स्ट फोर्थ नहीं फोर्थ फिफ्थ मार्शल एडवर्ब price index number Marshall Edward price index number. अभी लास्ट पेज में बेस ईयर क्वांटिटी लिया, पास्ट फेज ने क्या लिया, एरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट फेज एंड पास्ट फेज। फिशर्स ने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट फेज एंड पास्ट। इसके लिए क्या बचा, बच्चा देखो यहाँ पे देखो क्या दिमाग लगाया है। सी मार्शल एडवर्ड, डोंट राइट, लिसन, प्लस प्लस summation P1 upon P0 Q0 summation P1 upon P0 Q1 multiply by 100, numerator of last phase और past phase squared किया, denominator of last phase और past phase squared किया, multiply by 100 करके फॉर्मूला बना दिया। देखो इसका मतलब क्या होता है, डॉर्बिश वाली ने क्या किया पता है, ऐसे किया है, अपना फेवरेट ऑल टाइम। चलो भाई हाँ यहाँ पे देख, लिसन डोंट राइट, 4 + 3 5 + 7 ऐसा किया है, सॉरी इसका ऐसा है, हाँ होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका ऐसा है, देखा आपने एवरीवन। इसका कैसा है पता है, मार्शल एडवर्ड का क्या था ऊपर, 4 5 3 7, हाँ 4 + 5 3 + 7 200 ऐसा किया, समझा। अभी तुम भी कुछ ऐसे चेंजेस लाओ तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। Have you understood this? Yes. So numerators of last phase and past phase are added. Denominators of last phase and past phase are added. Multiply by 100. Done.
or P01 Marshall edge is P1 common summation P1 Q0 plus Q1 upon summation P0 Q0 plus Q1 multiply by 100. Now, what does this mean? What happened? ये Q0 plus Q1 कैंसिल नहीं होगा. मैं आपको समझाती हूँ. We are given P0 P1 Q0 Q1 4 5 6 7 8 9 1 2 3 10 11 12. हाँ ऐसा दिया. अभी आगे बढ़. ये क्या है मैं अब एक्सप्लेनिंग. Q0 plus Q1 Q0 plus Q1 1 plus 10 11 2 plus 11 13 3 plus 12 15. P1 into Q0 plus Q1 P1 into Q0 plus Q1 करके यहाँ पे लिख लो. 7 11 77 13 8 9 15 ये जो टोटल आएगा वो यहाँ पे आएगा. समझा? Similarly, P0 into Q0 plus Q1 means this. P0 into Q0 plus Q1. 11 4s are 44. 13 5s are 65. 15 6s are 90. ये टोटल यहाँ पे है. Have you understood? It is P1 into Q0 plus Q1 कॉलम का टोटल है. ये P0 into Q0 plus Q1 कॉलम का टोटल. तो हम ये ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते. जैसे x बार का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है, तो हम f कैंसिल कर सकते हैं? नहीं. वैसे ही यहाँ पे लिख सकते. अंडरस्टूड एवरीवन? यस. Here W is equals to Q0 plus Q1. Here W is equals to Q0 plus Q1. Right? 6. Marshall Edgeworth हो गया. Now next walls. Price index number. Walls. Price index number. अभी base year quantity last phase. Current year quantity past phase. Arithmetic mean of last phase and past phase Dorbish ball. Fisher's geometric mean of last phase and past phase. Marshall Edgeworth ने न्यूमरेटर दोनों को ऐड कर दिया. डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट फेज एंड पास्ट फेज आर एडेड. मल्टीप्लाई बाय 100. अभी वॉल्स के लिए कुछ भी बचा नहीं. So what he did? P01 walls is summation P1 upon P0 तो फिक्स है. आपको बताया मैंने. हाँ. Square root Q0 Q1 square root Q0 Q1 into 100. Have you understood? Yes. Copy this. Here W is equals to square root of Q0 Q1. Square root of Q0 Q1.
Done. Now see here, we'll revise. Price index. There aggregate method. Price index. अभी दूसरा मेथड है जो रिलेटिव मेथड. ये है ना फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के. देयर आर 3 एक्सरसाइज. फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के हो गए. यू विल गेट द टेक्स्ट बुक वेयर इट इज गिवन. हम टेक्स्ट बुक वाइज ही सम्स करेंगे. ऑल टेक्स्ट बुक्स आर पिक्ड अप फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, बट द ऑर्डर इज बीइंग रेक्टिफाइड. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ सी हियर. और रिलेटिव मेथड के लिए ए और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए वन साइड ऑफ अ पेज विल बी रिक्वायर्ड. तो ये फॉर्मूला की समरी एक साथ हो जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. यू अंडरस्टूड? सो वन साइड ऑफ अ पेज आपको छोड़ के बाद में सम स्टार्ट करें. क्लियर? नाउ सी विल रिवाइज. एग्रीगेट मेथड. प्राइस इंडेक्स P01 summation P1 upon summation P0 multiply by 100. Quantity index summation Q1 upon summation Q0 multiply by 100. Value index summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 multiply by 100. Now we start with last space. यहाँ पे sorry weighted aggregate. Summation P1 upon P0. Weighted aggregate method में सब जगह पे P1 upon P0 फिक्स है. P1 upon P0 W multiply by 100. Last space P1 upon P0 Q0 multiply by 100. Past space P1 upon P0 Q1 multiply by 100. Then comes next Darvish-Bally. It is arithmetic mean of last space and past space. P01 last space plus P01 past space divided by 2. ये एक ही याद रखने का, ये याद रखने की जरूरत नहीं है. Now Fisher's is geometric mean of last space and past space. It is square root of P01 last space into P01 past space. Next, Marshall-Edgeworth. Numerators of last space and past space are added. Denominators of last space and past space are added. Multiply by 100. Summation P1 upon P0 Q0 plus summation P1 upon P0 Q1 multiply by 100. Walls P1 upon P0 fix square root Q0 Q1 multiply by 100. चलो अभी मेरे साथ बोलो everyone. चलो everyone will speak. Yes, simple aggregate method. Price it. Summation P1 upon summation multiply by quantity index Q01 summation upon summation multiply by value index. Value index summation P1 Q1 upon summation multiply by 100. Next, we come to weighted aggregate method. Summation P1 upon P0 W multiply by 100. लिखने का भी ऐसा P1 W upon P0 W नहीं लिखने का. P1 upon P0 W multiply by 100. Last space summation P1 upon P0 Q0 multiply by 100. Past space summation P1 upon P0 Q1 multiply by 100. Darvish-Bally P01 last space plus P01 past space divided by 2. बस ये अपने आप थोड़े सम के बाद अपने आप याद रह जाए. Don't worry about it. First remember only this formula. P01 last space plus P01 past space divided by 2. Fisher's geometric mean of last space and past space. So square root of P01 last space into P01 past space. Next, Marshall-Edgeworth. Summation P1 upon P0 Q0 plus
summation P1 upon P0, Q1 Q1 multiply by 100. Next, balls, summation P1 upon P0, square root Q0 Q1 square root multiply by 100. Correct. चलो once again. Last one. अभी आज पहला दिन है, घर पे कुछ याद करने को देना नहीं है, राइट? एज इट इज तुम्हारी कॉलेज में तुम्हारे वेकेशन का बैंड बजा दिया है ना, 18 तक खींच खींच के, एज इट इज फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल खत्म हो जाती है, फिर बच्चों को 10 डेज का वेकेशन होता है, एंड देन 15 अप्रैल 16 अप्रैल से सब रिसीव। तो ये तो हुआ नहीं है, पूरी बैंड बजा दी है, पूरा वेकेशन का सत्यानाश कर दिया है। ऐसे नहीं कि फटफट एग्जाम देके खत्म करो, बच्चों को थोड़ा टाइम दो, सोचते खाली अपने लिए। और why we had to start? Because everywhere it is started. You're little bit late it is started. Why are you telling who it is late? Everywhere it is started. Because दिसंबर में प्रीलिम्स पक्का है, दिसंबर में प्रीलिम्स पक्का है, तो उसके पहले तो पोर्शन तो हमें कंप्लीट करना होगा। कॉलेज जैसे 2 सम करो, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज कर दो कर दो कर दो, ऐसे करके तो होगा नहीं। So we have to do it. You understood? That's why we couldn't give any vacation. So we had arranged parties for our children. Yes. तो बच्चों को थोड़ा 1 घंटे तो ऐसे शांति मिले, बाकी कॉलेज ने तो yes, we were on formulas. चलो अभी फॉर्मूलाज तुम्हारे हो गए, सम्स पे आते हैं। ऐसे नहीं करते, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक है जो तुम्हें जल्दी जल्दी मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक निकालो, तुम्हारी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक तो तुम्हें मिली है, हाँ वो निकालो, वहीं से सम्स है तो हम कर सकते हैं, ठीक है, तो डोंट वरी। पेज 77, 77, पेज 77। अभी सुधर जा, थोड़ा तो सुधर। यस, क्वेश्चन नंबर 1, find the price index number using simple aggregate method. Exercise 5.1 का फर्स्ट सम है। use 1995 as a base year in the following problem. ओ मैडम जी देखिए यहाँ पे प्राइस इन 1995, प्राइस इन 2000, which is base year? 1995 लिखो इधर, नहीं लिख तो नहीं सकते, जाने। ये P0 है, ये P1 है। यस, हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस इंडेक्स। सो वी स्टार्ट डूइंग इट। क्वेश्चन नंबर 1, लेट, लिखो लिखो, let price in 1995
P0 लिखो मैडम. गुड गर्ल. Price in 2000 BP1. Now we have to make 3 columns. Commodity. Price in 1995 P0. Price in 1995 or 2000 is P1. Here P Q R S T. Figures confirm करो. 15, 20, 24, 22, 28. यही है ना? 15, 20 horizontal level. 15, 20, 24, 22, 28. 23 है. ओके. अरे आधे जन की टेक्स्ट बुक में ना ऐसा है, आधे जन की टेक्स्ट बुक में 23 है. हम टेक्स्ट बुक में अपनी वाली देख लेते हैं, जो है वो लिख देते हैं. ठीक है. व्हाट इट इज? 22 है. अच्छा 23 लिखते हैं. वो रॉन्ग नहीं है. फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइनल आंसर as the method will remain same. 24. 20 क्या लिखना है? अरे हम टेक्स्ट बुक में कर देंगे करेक्शन. शांति रखो. लास्ट बेंच रिलैक्स. 27, 38, 32, 40, 45. कैसे टेक्स्ट बुक निकालते हैं मालूम है? हर समय इधर एक फिगर अलग है और आधे बच्चे को एक है, आधे बच्चे को एक. महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कोरोना में उसका भी गया है. बच्चे तो गए हैं, इनका भी गया है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स. टोटल करो. टोटल एवरीवन डू. डोंट टेल मी द आंसर. यू डू द टोटल. टोटलिंग करो. चुप बैठ. बोला मैंने नहीं बोलने का है. यस वेरी गुड. कैलकुलेटर से किया खुद से. अरे वाह, सही डायरेक्शन में दिमाग यूज किया तूने. पहली बार. चल P1 का टोटल करो. $182. Correct? Yes. Simple aggregate method. Simple aggregate method. Price index. ए लिखो. सेकेंड लास्ट बेंच लिखो. प्राइस इंडेक्स P01 summation P1 upon summation P0 multiply by 100. P1 is 182. P0 is 110. Multiply by 100. Cancel this. 2-year division as I am doing. 1820 divided by 11. 11 ones are 11. 7 2. 11 6 are 66. 6 0. 11 5 are 55. 4 6 0. 11 5 are 55. 50. 54 is recurring. 3 decimals तक करने का rounded up to 2 digits. So P01 is 165.5
0.45 is the final answer. No percentage. Like this. 165.45. Okay, thank you. Done, everyone? Next. Question number 2. That is question number 3 in government textbook. Find the price index number using simple aggregate method. Wheat, rice, milk, clothing, fuel. Kgs में किए. Base year price मतलब P0. Current year price means P1. So we need to prepare all 4 columns. Base year का total और current year का total लगेगा. चलो कॉपी करो सेम. Question number 2. इसमें भी अलग है थोड़े figures. 1 or 2 something is different. Commodity. पहले लिखो base year price. Let base year price be P0. Current year price be P1. Commodity unit P0 P1. Wheat, milk नहीं है, rice, milk, clothing, fuel, kgs, liter, meter, liter. 28, 40, 35, 82, 58, 36, 56, 45, 104, 72. कुछ अलग है क्या? अरे क्या है मैडम? बोलो बोलो क्या? 30 इधर ये भी अलग था, वही मैं पूछ रही थी. क्वेश्चन नंबर नहीं. Come on, draw the columns. Boys have to bring pencil and scale for drawing lines. Do the totaling. Are you getting this? Yes. Now next, simple aggregate method. ये हम next time solve करेंगे. Time हो गया. Right? Yes. We'll do this. Price index. हम next time. Not a problem. Bye, dear children. Have a nice day.
Everyone done? Done, no?